saying that so I am a part of EduSure. I represent EduSure. EduSure is going to train you for MA Economics entrance exams. We have been concentrating and training for ISI, DSE, JNU, IGIDR since the past 12 years. Now, our strategy is going to be that we are going to be doing theory and practicals. Okay. So if some of you are from economics honors, you'll know you've already done some theory, right? Aapne ki bhi hai. For example, if I talk about microeconomics or macroeconomics, you probably know what indifference curves are. You probably know what the SKM is. So agar aap economics background se ho, you know these things. So why are you coming to us then? You're coming to us because we will not only polish your theory, okay? We will make you do everything again, but with a mathematical orientation. So you should not only know what indifference curves are, you will not only know the different types of indifference curves, but you need to know how to take out the equilibrium in each type of indifference curve. You need to know how to take out the demand function for each type of indifference curve. You need to know the different manipulations required, the different type of questions that can come. So our entrances are very mathematical, and that is what makes it different from what you do in college, right? You have to solve everything. So like I always say in classes, you need to know everything theoretically, mathematically and graphically. हर एक इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट भी आपको theoretically, graphically, mathematically तीनों तरीकों से आना पड़ेगा. Okay, so that is what we are going to do. We are going to make sure that you are thorough with everything. You are thorough with your theory, graph, and maths. That's our job. Somebody's asking, what is the duration of the course? So the duration of the course, every year, every institute, I'm sure, tries to do things in a better manner. Okay, so this year, I'll share with you what's the plan for this year. So this year, as you all know, we are starting from the 24th of May. We are going to have weekly classes, which means that classes would be every day, Monday to Saturday, 7 to 8 p.m. online. Okay. So let me repeat that. Classes are going to be every day. रोज 1 घंटे की सिर्फ पढ़ाई करेंगे. The reason being, हम पहले 2 घंटे करते थे, but what we saw कि online में 2 घंटा एक साथ थोड़ा ज्यादा हो रहा है बच्चों के लिए. Okay, we don't want कि बच्चों का concentration कम हो जाए. Concentration कम होगा तो आप कम समझोगे. We don't want that. So that is why this year we are doing 1 hour every day. So classes छोटी होंगी तो आपके पास आपका जो attention span है वो ठीक रहेगा, right? So every day, Monday to Saturday, 7 to 8 p.m. Saturday mornings, we plan to have a doubt class every week. Okay, तो आप every week doubt class होगी ताकि आप regular रहें पढ़ाई से, और जो भी doubts एक normal course में, normal पढ़ाई में आपके पास आते रहते हैं, वो doubts आपके weekly ही solve होते रहें. Okay, so classes होंगी, doubt classes separate होंगी. साथ साथ में हर क्लास में आपको होमवर्क दिया जाएगा of questions. So theory तो आपको रिवाइज करनी ही पड़ेगी. जैसे अगर मैंने क्लास में कुछ पढ़ाया आपको मैंने छोटा सा टॉपिक पढ़ाया कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स क्या होती है. ओके, मैंने वो पढ़ाया, आपको वो रिवाइज करना पड़ेगा. क्लास में ही मैं उसकी थोड़े एग्जाम्पल्स कराऊंगी और आपको अपने साथ में थोड़े एग्जाम्पल्स करने पड़ेंगे. तो हम ऐसे ही प्लान करेंगे कि आप घर में भी थोड़ा करें. सो आइडियल जो, और बहुत बच्चे मुझसे पूछते हैं मैम हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे हम पढ़ाई करें. तो मुझे लगता है क्योंकि हमारी 7 से 8 क्लास है, स्ट्रैटेजी आप ये रखिए, 7 से पहले आप अपने कॉलेज पे ध्यान दीजिए. ओके, बिकॉज हमारा इस पूरे साल की सक्सेस बहुत डिपेंड करेगी दैट हाउ वेल यू मैनेज योर टाइम. आप अपने टाइम को कितने अच्छे से यूटिलाइज करते हो. आप कंफ्यूज्ड हो, मैं अभी क्या पढूं, मैं बाद में क्या पढूं, सैटरडे को क्या पढूं, रात को क्या पढूं, सुबह पे क्या पढूं, अभी कॉलेज की पढ़ाई करूं कि मैं अभी एंट्रेंसेस के लिए पढूं.
right? So you can be confused or you can work with a strategy. And मेरा suggestion ये होगा कि strategy रखिए 7 से पहले कॉलेज, पूरा कॉलेज, 7 के बाद एंट्रेंसेस, तो 7 से 8 आप क्लासेस अटेंड करिए और इमीडिएटली रिवीजन एंड होमवर्क कर दीजिए. तो आपका क्लियर डिस्टिंक्शन है, आपके माइंड में कभी भी कंफ्यूजन नहीं है कब पढ़ना है मुझे, कब पढ़ूं, अभी पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा. आपको पता है 7 से पहले आपका दिमाग बटा हुआ नहीं है. ओके, सो दैट इज द स्ट्रेटजी दैट आई एम प्रपोजिंग दैट यू फॉलो. 7 PM अर्लियर सिर्फ कॉलेज पे ध्यान दो, 7 PM आफ्टर सिर्फ एंट्रेंसेस पे ध्यान दो. डिवाइड योर डे एंड दोनों को साथ साथ में लेके चलो. ओके, सो दैट इज माय फर्स्ट सजेशन फॉर टाइम मैनेजमेंट, जो बहुत जरूरी है. बिकॉज बहुत बच्चे या तो एंट्रेंसेस पे ध्यान दे जाते हैं, या बहुत लोग होते हैं कि मैम साल ड्रॉप कर दूं, मैं साल ड्रॉप कर लूं मैम क्योंकि मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया एंट्रेंसेस पे. सो ऐसे आप पूरा टाइम थोड़ी ना कॉलेज के लिए पढ़ते रहते हो, बट क्योंकि स्ट्रैटेजी नहीं थी, राइट. ओके, नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन है. निधि पूछ रही है मैम आई कम फ्रॉम कॉलेज एट 5, समटाइम्स 6:45, so then what do I do? So Nidhi, I would still suggest you still follow the same. I will tell you what I mean by that. So आप जब कॉलेज जाते हो ना, अब थोड़ा टाइम वो नहीं है कि आप कॉलेज में 5 बजे तक हो. कितनी क्लासेस होंगी आपकी, 3-4, पूरे टाइम क्लासेस नहीं होती, आपके पास बीच में फ्री टाइम भी होता है, सुबह का भी टाइम होता है, मे बी कॉलेज लेट स्टार्ट हो रहा हो, उसको यूटिलाइज करो. अगर आपको 2 चीजें करनी है, आजकल एक कॉन्सेप्ट है द वीकेंड एंटरप्रेन्योर, राइट. इफ यू फॉलो, आजकल तो स्टार्टअप्स का जमाना है. सो पीपल आर डूइंग स्टार्टअप्स इन वीकेंड्स. वो ऑफिस पूरा करते हैं, उसके बाद वो अपने स्टार्टअप पे काम करते हैं. आपको भी वही करना है. आपका ऑफिस है, आपका कॉलेज, आप कॉलेज अटेंड करो, सुबह काम करो, दोपहर में काम करो, जब टाइम मिलता है काम करो, फिर शाम को एंड वीकेंड्स पे स्टार्टअप पे काम करो. ओके, सो इट्स द सेम स्ट्रेटजी. यू हैव टू टेक आउट टाइम. आप ये नहीं मुझे बोल सकते कि मैम 7 बजे तक तो मेरे पास टाइम नहीं है. होगा, सुबह के टाइम होगा, लंच में होगा, कभी ना कभी होगा. सो कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट. ओके, देन विल यू प्रोवाइड बुक्स, नोट्स एंड क्वेश्चन पेपर? एब्सोल्युटली एवरीथिंग. We will provide you books and notes and question papers. We will be sending you hard copies of everything. So we will, when you enroll with us, I will be taking down your addresses and आपके doorstep पर mathematics, statistics, microeconomics, macroeconomics सबकी books, EduSure की books and notes आपके घर तक deliver होगी. Okay, so that is also something that we have been trying since a long time, and this year finally we'll be able to deliver that. So then I'm question ki syllabus kab tak khatam hoga? So this answer to that is very simple. We have our first exam, which is of IIT, which will be in February. Okay, so February hamara first exam hai, means we need to be prepared before February. Okay, so this year, that is why our endeavor would be that we finish our syllabus for IIT by December, so that January we have for revision, and after IIT, whatever needs to be done, which we could not complete by December, then we will be finishing that. So IIT syllabus by December, we will finish. That is the schedule that we will be making. Can we have DAO classes on Sundays if we have college on Saturdays? So we can figure that out. If Saturdays a lot of people are not being able to come, we can always have it as Sunday mornings also. So that is flexible depending on how the students want it. Will we prepare for GATE? GATE is not for the economics entrances. So if you want to take admission in IIT, you will need to give JAM. If you want masters, GATE is a score which is used for things like maybe a
some government job entrances, or they need your GATE score. And this is more for engineering students. Of course, it's for economics also. The subject is there, but you don't need it for MSc economics entrances. Yes, Shomali. So for second year students, we have an integrated course, which will start in your second year and end in your third year. And the details of which you can just give us a call and I'll explain it. I'll explain it to you over the phone. All right. So we have a 2-year program for people who are in their second year. And let me tell you, our success ratio for the 2-year program is very good, because these people, we were able to work not only on their concepts, but their basics also. Okay. So if you're in your second year, great, get in touch and let's start immediately. Sunday morning is better, Rupanata. All right. IIT is in Feb. I know GATE is for economics, but not for MSc entrances. My notes are going to be, our notes are going to be enough. You need only refer to them. In case sometimes if you feel that something you are not understanding, you may refer to other things, but the notes are comprehensive. So subjects covered would be all the subjects for your entrances. So ranging from all of mathematics, statistics, econometrics to microeconomics, macroeconomics, and Indian economy. So will the classes go on to the last exam? We don't really need classes till the last exam. We will need doubt classes, which will go on till the last exam. Yes, Nidhi, you will. Of course, Delhi University Master's Syllabus. Do you mean the entrance, Ruchi, or do you mean teaching for the MA program? Like what you will do at DSE? You want coaching for classes at DSE, or you want the entrance coaching? So we do entrance coaching. I don't coach for the regular things that are happening at DSE. Yes, Harshit, the course starts from the basics. You will get access to the student portal till end of June, which is typically when DSE used to happen. In case there is a delay in the exam, maximum till July, the delay should be. So we will provide you an extension. Parashar, I'm not aware of this. So you can just let us know how many of you and when is it a problem, and if it can be adjusted from your end, and we'll take it from there. So just let us know. I have received requests from 3 people and I've already spoken with them. So if you can just get in touch with me, or I'll ask sir about it and we'll figure out what we can do. Entrance, of course, Ruchi, we'll be doing everything. Yes, all the recordings for all the classes that we hold, every class that we hold will be recorded and uploaded for you to be able to view it again. So our student portal is actually one of our fortes. We believe that it is very well organized, where for every topic, so the student portal will first be subject wise. You choose the subject that you want to go to. Say, let's say you want to study mathematics. So inside mathematics, then the first subject, let's say, which is matrices, you click on matrices, and then everything about matrices will come, which will first start with, let's say, 6 theory videos for what matrices are and the different things in matrices and determinants. And then after that, the solutions to all the past year questions. English, logical reasoning, we will be giving you tests for those, and we'll be giving you notes for those, not really classes, because I don't think, logical reasoning, of course, logical reasoning, yes, English, just practice. BCom graduates, of course, Akshay, there is Kabir here in this group, he's an English grad. He could understand the classes, I'm sure a BCom grad can. So background is less important, but a good base in maths is actually more important. If you have a good base in maths, a lot of engineering students, math students, BCom students make it.
But like I said, an English honors guy can make it, but you need to have a good base in maths. That's all we require from you. All right, so any other questions? And I would also like you to introduce you to Sir. I'm sure you all are waiting for him also. So he's right here, and he's also here to answer your doubts. Yes, mock tests are conducted and included for everything. So I'm going to now bring on Sir, who's going to be there to solve all your queries and take you through a little bit of a demo session that we promised for today. So yes, Saurav, you do. All right, so welcoming Sir, so please come. Your students are waiting for you. Good evening, everyone. I hope I'm audible to everyone. Please raise your hands if I'm audible. So I hope that ma'am took you through the entire of the course, and it was a very informative session. I was on the sidelines, and it was a perfectly drafted kind of a session by ma'am, and she was able to answer most of your doubts and your questions. Now, some of you are already asking me that, sir, are we going to do a trial class? Yes, we are going to do a trial class. Abhi tak information आपको दे रहे थे regarding the course, and आपके questions को solve कर रहे थे. अगर trial class आपको देखना है, this is the way that we teach. Let me make you go through a particular topic that we teach. Do we get Eco Topper, Eco Master? So Eco Foundation course material is accessible in the Eco Topper course as well, because currently it is being offered because we feel that the foundation of the student has to be very strong. Although it is a lot of material, if you take a look at the portal that we have, it comprises of approximately 4,200 odd videos. Now, in order to cover that in a single year might be a challenge. So many of the students actually prefer to refer to the Eco Foundation videos only in the topics where they have a challenge. Okay, so yes, the answer to your question is yes, but it can only be treated as a reference material, right? Yeah, right. So let me take this opportunity to take you through a couple of topics and make you feel our classes. Okay, so we begin with a topic called central tendency today. Okay, so we begin with this topic. Okay, this is just to give you insight into our methodology of teaching, right? That is the purpose of a trial class at the end of the day. So let's begin with the topic central tendency and dispersion. Okay, central tendency and dispersion is a topic which most of us have already done in our school life. Okay, central tendency basically points to mean, median, and mode. Mean, median, and mode was one of the most common and
जिसको मैथ्स एक्चुअली पसंद भी नहीं था, वो भी बोलते थे कि मीन, मीडियन एंड मोड के भरोसे निकल जाएगा मैथ्स, राइट? दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक्स व्हेन इट केम टू स्टूडेंट्स. जिस स्टूडेंट को पसंद नहीं था मैथमेटिक्स, उनके लिए ये लाइफलाइन था. ओके, सो सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर में 3 पॉपुलर मेजर्स हैं. वन इज द मीन. मीन are of 3 different types. First mean is the arithmetic mean, which is the simple average of all the elements. If there are x1, x2 up to xn elements, the arithmetic mean is simply the summation divided by the total number of elements, right? The other kind of mean that we have is called the geometric mean. Okay, geometric mean is the product of all the elements, and we take nth root for n elements. So I multiply all the n elements and I take the nth root, so to the power 1 by n. This is how we find out geometric mean. Can you give me an example कहां पर हम लोग arithmetic mean को यूज करते हैं, कहां पर हम लोग geometric mean को यूज करते हैं? Would anyone like to give examples कि सर रियल लाइफ में कौन सा मीन कहां पर हम लोग को यूज करना चाहिए? बिकॉज अल्टीमेटली व्हाट यू स्टडी, यू शुड नो कहां पर उसको यूज करेंगे. पढ़ाई तो इसलिए करते हैं, राइट? पढ़ाई लाइफ डिफिकल्ट करने के लिए नहीं करते हैं, ये समझने के लिए करते हैं कि कहां पर किस चीज को अप्लाई करना चाहिए इन रियल लाइफ. ओके, सो अरिथमेटिक मीन को कहां पर, अरिथमेटिक मीन, ओके, अदिति गुड, श्रेयस good, Saurav, okay. So what I get from many of you, Deepak, good. So what I got from many of you, arithmetic mean is used to find out your average scores. So your ISC, CBSE percentages that you calculate is all arithmetic mean. Okay. Best of 4 में 4 subjects जिसमें आपको maximum मिले हैं marks, उसका average निकालते हैं, and that is your percentage. So average of scores in a particular class, average of scores of a student across subjects, these are all examples of arithmetic mean. Geometric mean, on the other hand, is used in order to find out returns or average inflation. वो भी return के जैसा ही है, right? So if I want to find out what is the average inflation in the last 5 years, right? What is the average inflation in the last 5 years? What do? You take the inflation of every year and you find out the geometric mean. That will give you the average inflation every year, right? So geometric mean is basically used to calculate the mean of returns, asset ke returns, interest values, inflation. Okay, these are all used for geometric mean. CAGR, yes, आपका asset का क्या है? Compounded annual growth rate. CAGR is a very common term which is used in mutual funds and financial assets, right? These are all geometric mean. Average कैसे निकालेंगे? Geometric mean से निकालेंगे. Okay. Average growth rate, correct, Saurav. Harmonic mean. Harmonic mean क्या है? Harmonic mean is basically n divided by summation of the reciprocals, right? So this kind of a mean is also the mean for x1 to xn. अब ये हार्मोनिक मीन कहां पर यूज करते हैं? एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है जो हम लोग क्लास 8 से सुनते हुए आ रहे हैं, जो हार्मोनिक मीन का परफेक्ट एग्जांपल है. This is exactly where we use the harmonic mean. Would any of you want to share that with me? I want this to be a very interactive kind of a session. मैं बहुत ही interactive session normally अपने classes में करता हूँ. Okay, so
please put it in the chat box. I'll be happy to see your responses. मैं आपके information को देख पा रहा हूँ. So please allow me to see. Saurav, absolutely perfect answer. What about the others? Please share. क्या आपको लगता है हार्मोनिक मीन कहां पर यूज होता है? करेक्ट दीपक, दैट इज गुड. गुड, सही, राइट. त्रिदिवेश, वेरी गुड. ओके, Raj, not perfectly correct. Anyway, harmonic mean usage is basically सबसे ज्यादा common way है average speed. If I go somewhere, if I go from point A to B at a speed of 40 and I go from B to A at a speed of 60, what is the average speed of my return trip? That will be the harmonic mean of the two. That will be the harmonic mean of the two. So average speed is harmonic mean. Okay, जब भी मुझे एवरेज स्पीड निकालना है, एक ही डिस्टेंस 5 डिफरेंट लोगों ने कवर किया. व्हाट इज द एवरेज स्पीड? हार्मोनिक मीन. ओके, एवरेज व्हेन इट कम्स टू स्पीड इज हार्मोनिक मीन. हार्मोनिक मीन. So if I have to go to Delhi from Kanyakumari to Delhi, if I go at a particular speed when I reach Delhi. Okay, when I go back from Delhi to Kanyakumari, I go at a different speed. So what is my average speed of the return trip? I will take the average of the Kanyakumari to Delhi trip and the Delhi to the Kanyakumari trip from the harmonic mean perspective. ठीक है, that will enable me to find out the true average. तो कभी भी मुझे average speed निकालना है, I will always use the harmonic mean. ठीक है, that is an application of the harmonic mean. And there is a very interesting relationship between three means. Arithmetic mean always greater than equal to geometric mean, greater than equal to harmonic mean. ये बहुत ही ज्यादा important relationship. Maxima minima में 50 to 60% of the problems in the topic maxima and minima will be solved only by this inequality. For the ones who have already done the Eco Topper course, you will know this. AM greater than equal to GM greater than equal to HM. ये relationship will basically determine so many of your ISI DSE questions. जिसका कोई लिमिट नहीं है. बहुत सारे ISI DSE questions को solve करते हैं by this. अब मीडियन क्या है? मीडियन इज द मिडिल मोस्ट वैल्यू. ठीक है, एक कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में यू फाइंड इट आउट इन दिस वे. ओके, बाकी अगर A1, A2, A3, A4, A5 are 5 numbers arranged in ascending order, A3 is the middle most value and this is the median. बहुत सिंपल, यही है. ओके, एंड अगर यहाँ पर A6 है, then A3 and A4 are the two middle values. दोनों का average arithmetic mean मैं ले लूंगा and that will be my median. ठीक है, बहुत सिंपल, that's it. तो ऐसे हम लोग median निकालते हैं. Mode is the value that occurs the most in a data set. सबसे ज्यादा occurring value is called the mode. ठीक है, that is the mean, median and mode. तो ये हो गए तीन मेरे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन एंड मोड. अब ये मीन, मीडियन एंड मोड के बीच में रिलेशनशिप क्या है? फॉर अ fairly good, if I may say, if it is a fairly good distribution, well defined distribution, then the relationship between mean, median and mode is as follows.
arithmetic mean minus mode is equal to 3 times arithmetic mean minus median. Okay, mean minus median into 3 is equal to mean minus mode. Basically ये है. Okay, this is basically the relationship between the mean, median and mode for a well defined distribution. ठीक है, ये 3 measures के अलावा और भी measures है central tendency में, like mid range. Mid range is nothing but minimum value plus max value divided by 2. ठीक है, इसके बाद में आते हैं डिस्पर्जन में. डिस्पर्जन में सबसे ज्यादा पॉपुलर मेजर है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन. डिस्पर्जन है क्या? कितना ज्यादा क्लस्टरिंग है डेटा में, कितना डेटा एक दूसरे के पास में है. What is the distance between the data? If the data is very close to each other, then the dispersion or the dispersal of the data is very low. So the standard deviation, which is a measure of the dispersal of data, is a very low number. And if the data is well spread out, काफी अच्छा है स्प्रेड, एक वैल्यू बहुत हाई है, एक वैल्यू बहुत ही लो है. इफ द डेटा इज वेल स्प्रेड आउट, द स्टैंडर्ड डिविएशन इज अ वेरी हाई नंबर. सो जितना ज्यादा डिस्पर्सल है, जितना ज्यादा लेस क्लस्टरिंग है ऑफ द डेटा. क्लस्टरिंग का मतलब बहुत आसपास में है डेटा, आसपास में नहीं है, दूर दूर है डेटा, then the standard deviation is a very high value. Okay, so that is what we mean by dispersion, right? Standard deviation as a measure is basically root over 1 by n summation xi minus x bar whole square. That is arithmetic mean से क्या distance है each value of x का, उसका average हम लोग निकालते हैं. Okay, and since it can be a negative number, इसीलिए negative को square करके उसका root ले रहे हैं, so that there is no bias, there is no negative or positive bias in the distribution. ठीक है, so this is the measure of standard deviation. Variance is basically nothing but standard deviation whole square. ठीक है, बहुत सिंपल है. तो ये इतना सा जो है measures, अगर ये आपको समझ में आता है, you will be able to solve many problems in ISI DSE. And let me just give you a flavor of problems of ISI DSE. Okay, मैं आपको एक flavor देता हूं, उससे आपको समझ में आएगा. अच्छा, before I go into that, एक और inequality है जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो आपको help करेगा to solve many problems. That is the Kochi-Schwarz inequality. This is an inequality जो काफी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं. अरे सर क्या था, लेस देन इक्वल टू था या ग्रेटर देन इक्वल टू था, ये भूल जाते हैं. ओके, कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी इज एन इनइक्वालिटी जो कितने सारे प्रूफ्स में आपको काम आएगा, जिसका कोई लिमिट नहीं है. ओके, एंड हाउ टू रिमेंबर दिस, इसको रिमेंबर करने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है. लेट मी शो यू दैट मेथड. सो हमें पता है कि स्टैंडर्ड डिविएशन क्या था, या वेरिएंस क्या था. वेरिएंस था ये. ओके, ये एक होल स्क्वायर का समेशन है, तो ये डेफिनेटली नेगेटिव नहीं हो सकता. नेगेटिव नहीं हो सकता, तो दिस ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो इसको अगर मैं एक्सपैंड करता हूं, ये मेरे पास में ये आ जाएगा माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब इसको ऐसे लिखा जा सकता है समेशन 1 by n square, क्योंकि 1 by n can be written as summation 1 by n square, क्योंकि 1 by n square if I add n times तो 1 by n बन जाता है, right? क्योंकि this will become n by n square which is equal to 1 by n. Correct? तो if I can write this part as summation 1 by n square, this is summation xi square greater than equal to x bar square. अभी x bar क्या है? x bar is my arithmetic mean. तो arithmetic mean को कैसे लिखा जा सकता है? arithmetic mean को ऐसे लिखा जाएगा
ठीक है, अब इसको देखिए और इसको देखिए, मैं ऐसे लिख सकता हूं समेशन यू आई स्क्वायर समेशन वी आई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू समेशन यू आई वी आई होल स्क्वायर, जहां पर यू आई इज 1/n, वी आई इज एक्स आई, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां से मैं यहां पर पहुंच गया एंड इनइक्वालिटी मुझे याद हो गई। तो ये वेरिएंस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के इनइक्वालिटी से आई विल ऑलवेज बी एबल टू कोरिलेट एंड रिमेंबर द कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिक जो काफी सारे स्टूडेंट्स ओवरलुक करते हैं। उनका हमेशा ये क्वेश्चन रहता है ईयर आफ्टर ईयर, सर ये कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी में क्या है, लेस देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, कभी पल्ले नहीं पड़ा। ऐसे याद करेंगे पल्ले पड़ेगा, ऐसे इसको याद करेंगे, यू विल ऑलवेज बी एबल टू रिमेंबर द इनइक्वालिटी। सही है, चलिए, तो अगर ये आपको याद हो गया, एक कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन को करते हैं। ओके, कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन को करते हैं, और क्वेश्चन है आपके सामने, ये है ISI 2013 क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पर है, ये रहा ISI 2013 क्वेश्चन नंबर 29। बिग हिंट, कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी को आपको अप्लाई करना है यहां पे। Yes. So in order to find out the answer, A and B में कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी अप्लाई करके आपको मिल जाएगा आंसर। अच्छा, C and D इज अ रिजल्ट। ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, ये हम लोग स्कूल में करते थे, ये बहुत ही सिंपल है। ओके, कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी को अप्लाई करें और मेरे को इसका आंसर बताएं। Cauchy Schwarz inequality से you will be able to find out the relationship between the mean deviation around the arithmetic mean and the standard deviation। इतना बड़ा हिंट मैंने आपको दे दिया है, प्लीज मेक एन अटेम्प्ट। मैं आपके लिए पोल एक्टिवेट कर रहा हूं सो दैट ऑल ऑफ यू विल बी एबल टू वोट A, B, C और D। ठीक है, दिस इज द वे दैट वी टीच, सो वी वांट इट टू बी अ वेरी इंटरैक्टिव काइंड ऑफ अ सेशन एज आई शेयर्ड। सो मैं सबके लिए यही चाहूंगा दैट एवरीवन वोट्स फॉर योर आंसर, राइट। सो मैंने पोल को एक्टिवेट कर दिया है, प्लीज वोट फॉर योर आंसर। और फॉर द स्टूडेंट्स हु डोंट वांट टू मार्क एन आंसर, एक और ऑप्शन मैंने आपको दे दिया, सर आई विल नॉट डू, सर प्लीज यू डू। सर प्लीज यू डू इज एन ऑप्शन विच आई हैव गिवन टू द स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए, टेल मी व्हाट इज द आंसर, प्लीज पुट योर आंसर इन द पोल, पोल में आंसर करिए। अच्छा, सर प्लीज यू डू को ओनली एज ए लास्ट रिजॉर्ट में रखिए। मैं देख रहा हूं कि सबसे ज्यादा लोग सर प्लीज यू डू पे मार्क कर रहे हैं, प्लीज खुद से ट्राई करिए। सही है, सही है, ओके, ठीक है। एक प्रॉमिस मैं कर सकता हूं, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए करूंगा, इसके बाद में एक और हम लोग करेंगे क्वेश्चन जिसमें कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी का एप्लीकेशन है, वो आपको करना पड़ेगा। डील? अगर डील तो फिर चलिए इसको मैं सॉल्व करता हूं आपके लिए। ओके, लास्ट एंड फाइनल एफर्ट, प्लीज पुट योर आंसर इन द लास्ट 5 4 3 2 1। प्लीज पुट आइदर ABCD या सर प्लीज यू डू डाल दीजिए, कोई बात नहीं। मैं एंड कर रहा हूं पोल, फिर आप लोग एक दूसरे का आंसर्स को देख पाएंगे। ओके, आई एम एंडिंग द पोल। चलिए, वेरी गुड, शेयरिंग द रिजल्ट्स। तो ये आया आपका पोल का रिजल्ट, ऑल ऑफ यू आर एबल टू सी। तो इसको अगर सॉल्व करना है, सबसे पहले तो मीन डिविएशन
क्या है? मीन डिविएशन इज दिस, मीन डिविएशन अबाउट ए इज दिस, ठीक है। अब मीन डिविएशन इज मिनिमम अबाउट द मीडियन, okay, mean deviation is minimum about the median, not the arithmetic mean. Root mean square deviation is nothing but the standard deviation. Root mean square deviation इसको बोलते हैं, okay, it is minimum about the mean. Standard deviation is the minimum root mean square deviation, okay. तो रूट मीन स्क्वायर डिविएशन इज लीस्ट व्हेन ए इज द मीन नॉट द मीडियन, तो सी एंड डी आउट है। अब हम लोग कंपेयर करते हैं ए एंड बी में। ए एंड बी में बेसिकली वो बोल रहे हैं कि मीन डिविएशन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन का कंपैरिजन हमें करना है, ओके। तो एक काम करते हैं, बहुत ही सिंपल सा अप्रोच है। यू आई को ले लेते हैं 1/n, वी आई को ले लेते हैं मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार, सही है। तो यू आई को ले लेते हैं 1/n, वी आई को ये ले लेते हैं, फिर कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी अप्लाई करें, समेशन यू आई स्क्वायर समेशन वी आई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू समेशन यू आई वी आई होल स्क्वायर। तो यहां पर 1/n स्क्वायर समेशन मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1/n समेशन मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या है? मॉड स्क्वायर कैन बी रिटन एज नॉर्मल ब्रैकेट स्क्वायर। मॉड का मैं स्क्वायर करूं या नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर करूं, वैल्यू तो सेम ही आएगा। तो ये आया समेशन 1/n स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1/n, तो 1/n समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ये 1/n समेशन मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार, ये क्या है? मीन डिविएशन स्क्वायर है। और ये लेफ्ट हैंड साइड क्या है? वेरियंस स्क्वायर है। सो वेरियंस स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू मीन डिविएशन स्क्वायर। दोनों साइड का रूट अगर मैं लेता हूं, दोनों ही पॉजिटिव वैल्यू है, तो रूट अगर लूंगा तो इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज। तो स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरियंस अंडर रूट बिकम स्टैंडर्ड डिविएशन, राइट। सॉरी, ये वेरियंस है, वेरियंस स्क्वायर नहीं है। रूट ओवर वेरियंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन ग्रेटर देन इक्वल टू मीन डिविएशन। दोनों साइड में रूट ले रहा हूं, तो standard deviation around the arithmetic mean is always greater than equal to mean deviation. The mean deviation about arithmetic mean cannot exceed the standard deviation is the correct answer. अगर सबको समझ में आया then please raise your hand or give me a thumbs up. So what I did was I simply used the Cauchy-Schwarz inequality. बहुत सिंपल तरीके से मैंने खाली इसमें पुट कर दिया है और आंसर निकल गया, सही है। यस, सो दिस इज हाउ वी डू इट। तो ये हम लोग का 29। अब एज आई प्रॉमिस्ड आई विल गिव यू वन मोर चांस टू डू अ प्रॉब्लम विथ कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। एक और चांस मैं आपको दे रहा हूं। ISI 2006 क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए और अब इसका आंसर को पोल में पुट करिए। वन मोर चांस टू रिडीम योरसेल्फ इफ यू वर नॉट एबल टू डू द प्रीवियस प्रॉब्लम। इसको भी कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी से करना है। प्लीज मेक एन अटेम्प्ट, डू इट। आंसर करें। मैं यहीं पर हूं, मैं देख रहा हूं कि कितने लोग आंसर कर रहे हैं। यू कैन पुट योर आंसर इन द पोल। आई हैव एक्टिवेटेड द पोल अगेन, प्लीज डू इट, डू इट। ओके,
अच्छा, आई एम एंडिंग द पोल इन 5, 4, 3, 2, 1. प्लीज पुट इन योर आंसर्स राइट नाउ. अभी आंसर को पुट करें. आई एम एंडिंग द पोल नाउ. लास्ट चांस. अरे ये क्या हुआ? अभी देर इज अ टाई बिटवीन ए एंड डी. चलिए ठीक है, देखते हैं. सो लेट्स मेक एन अटेम्प्ट एट दिस. ISI 2006 क्वेश्चन नंबर 5. ये n numbers हैं. Root mean square deviation is this. Okay, is a correct measure of central tendency. If AM denotes arithmetic mean of the set of numbers, then which of the following statement is correct? चलिए देखते हैं. So let's take ui as 1 by n, vi as xi. ठीक है, तो summation 1 by n square summation xi square greater than equal to 1 by n summation xi whole square. तो ये लेफ्ट हैंड साइड को क्या लिखा जाएगा? 1 by n summation xi square greater than equal to, ये क्या है? अरिथमेटिक मीन होल स्क्वायर. ठीक है, सो इफ आई टेक रूट बोथ साइड्स, ये टू द पावर हाफ हो जाएगा और ये टू द पावर हाफ हो जाएगा. सो दिस इज नथिंग बट RMS. ये LHS देखिए, RMS हो गया ना. RMS greater than equal to arithmetic mean. X bar square to the power half is simply x bar. So RMS will always be greater than equal to arithmetic mean. Okay, अब equality कब होगा? Equality होगा when all the numbers are not equal. Sorry, when will RMS be equal to the arithmetic mean? When all the numbers are equal, isn't it? Arithmetic mean greater than equal to geometric mean. Equality कब होता है? Equality होता है when all the values are the same. That is, x1 is equal to x2 is equal to x3 is equal to x4 is equal to dot dot xn. If all of them are the same, then they are equal. So RMS is always greater than equal to arithmetic mean. RMS is greater than the arithmetic mean when all the values are not equal. और वही आंसर है. काफी लोग ए में फंस गए. ए कैसे? ये तो उल्टा है. अगर आपने बी मार्क किया होता तब तो फिर भी समझ में आता, राइट? नॉर्मली द क्लासेस विल गो स्लोअर देन दिस. आज हमारे पास में इतना टाइम था नहीं, सो आई जस्ट wanted to give you a sneak peek. So normally when I give you a question to do, I give you approximately 3 to 4 minutes in order to make an attempt at it. Okay, तो normally 3 से 4 मिनट आपको मिलता है. And we normally record each and every session. तो पूरा ये जो सेशन है वो आपको एज अ रिकॉर्डिंग भी मिल जाता है. सो फिर आप अपने पेस को खुद से डिसाइड कर सकते हैं. इफ यू वांट टू गो स्लो देन यू गो स्लो. अगर आपको पूरे क्लास को 2x के वीडियो के स्पीड में देखना है तो देखिए. 0.5x के वीडियो के स्पीड में देखना है तो वो भी देख सकते हैं धीरे धीरे, राइट? सो द चॉइस इज अप टू यू. यू कैन रिवाइंड फॉरवर्ड, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट. वीडियो आपको मिल गया. Okay, so that's about it. So I don't want to overshoot the time. I hope that all of you got a good glimpse and a sneak peek into our sessions and the classes, and I hope that you got all the information that you were looking for in terms of the course. Yes, we are going to do the classes Monday to Saturday 7 p.m. to 8 p.m. I know that a few of you have had issues, but 8 p.m. to 9 p.m. में और ज्यादा issues आ रहे हैं हमारे पास में. 9 p.m. to 10 p.m. और ज्यादा issues आ रहे हैं. So I will tell this to you absolutely straight up. 7 p.m. to 8 p.m. आपको टाइम निकालना पड़ेगा Monday to Saturday.
please take out time. If and the classes are online, आप कहीं से भी कर सकते हैं. You can do it from anywhere, literally. Okay, you only need a Zoom ID. That's it. Okay, it's as simple as that. So I leave you at this juncture and at this point, and I wish each of you all the best for the Eco Topper course and for the 2023 examination. Okay, thank you so much for joining in for the session today, and I hope to see you in class very, very soon.